अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी लगातार भारत की संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने संसद की नई बिल्डिंग को लेकर तो विवादित बयान दिया ही है, अपनी सदस्यता को लेकर भी बातों को घुमाते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के बाद वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनकी संसद की सदस्यता छीनी गई है। विपक्ष की एकता और केजरीवाल के अध्यादेश के खिलाफ मुहिम के सवाल पर राहुल ने कहा कि इस पर पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है और जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। राहुल ने फिर कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को क्लीन चिट भी दे दी। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim. I mean, this is a question you should ask Mr. Modi. So more apt. Okay. I don't know how you'll get there. As soon as we get him here. I don't know how you'll get there, but yeah, I think we better question directed at him. Are you inviting the Prime Minister? Absolutely, we'll invite for his talk. I look forward to hearing it. अमेरिका में राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, जिस भी शहर में पहुंच रहे हैं, उनका टारगेट एक ही है, भारत की आलोचना और पीएम मोदी का विरोध। यहां तक कि कई सवालों के जवाब में भी राहुल गांधी यही बोल देते हैं कि इन सवालों के जवाब आप पीएम मोदी से लीजिए। I mean, this is a question you should ask Mr. Modi. So more apt. Okay. I don't know how you'll get there. As soon as we get him here. I don't know how you'll get there, but yeah, I think we better question directed at him. Are you inviting the Prime Minister? Absolutely, we'll invite for his talk. I look forward to hearing it. पहले सैन फ्रांसिस्को, फिर कैलिफोर्निया और अब वॉशिंगटन, राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर वार कर रहे हैं। भारत के सिस्टम से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी संसद की सदस्यता सरकार के दबाव में छीनी गई, उनकी बोलने की आजादी को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, उनकी फोन टैपिंग की जा रही है। अपने ही आरोपों में अंतर्विरोध जताते हुए उन्होंने एक तरफ तो ये कह दिया कि विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, साथ ही ये भी बता दिया कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। How united is the opposition in India, and why isn't Congress supporting Kejriwal in the ordinance issue? Well, that's an internal discussion we are having. The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. It's a complicated discussion because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen. राहुल गांधी लगातार विपक्षी एकता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी दूसरी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, तो राहुल ने जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे पर टाल दिया। Would Congress now be willing to consider being part of a coalition government that it does not lead? Well, I mean, these are questions that need to be asked to the Congress president because he's the decision maker. I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own without any, electoral math. राहुल गांधी वॉशिंगटन में बैठकर नरेंद्र मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से वॉशिंगटन तक इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है कि पीएम मोदी कितने पॉपुलर हैं। और जब मोदी की इसी पॉपुलैरिटी पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो वो सकपका गए। Figure Modi maintains very high levels, in fact, worldwide high levels of popularity. Why do you think that's the case? Why do so many Indians support the Modi government? I mean, there is a definite capture of the institutions
of the country. There's a definite capture of the press in the country. I'm not convinced that, I don't believe everything I hear. I walked across India, walked from Kanyakumari to Kashmir, and talked directly to millions of Indian people, and they didn't seem very happy to me. And they were very clear that there were serious issues with regards to unemployment. There was massive price rise. So there was an angst in the people. Now, and look at the Karnataka election, and wait and watch the next 3 or 4 state elections. That I think is a better indicator of what's going to happen. इससे पहले कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी राहुल ने कहा था कि उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप गई नहीं बल्कि ले ली गई। I heard in the introduction that I was a member of parliament until 2 months ago. I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined what I see going on in our country. It was way outside anything that I had ever imagined. So, to be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. राहुल ने अमेरिका की जमीन पर एक बार फिर पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। संसद में सेंगोल की स्थापना के वक्त पीएम मोदी ने दंडवत प्रणाम किया था। राहुल ने पीएम मोदी के दंडवत होने का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो किसी के सामने दंडवत नहीं होते। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? नागपुर में अपने संबोधन के दौरान भागवत ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने देश की संसद और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए तो भागवत ने उन्हें तीखी नसीहत दी। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहती है, ये पद्धति है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।